Dear students, today we will discuss how to improve our skill in writing. Okay? And here are some tips to you. आमे आज डिस्कसन करिबा आमर जो राइटिंग स्किलटा केमिति आमे इम्प्रूव करि परिबा. ओके, एंड वी आर आस्क्ड टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस जस्ट लाइक राइटिंग शॉर्ट एसेज, राइटिंग रिपोर्ट्स, etc etc. Okay, now what are the tips? Number 1, all compositions begin in mind. You see, although we write different compositions, different letters, different reports, etc. on a pen and paper, but actually the composition starts in our mind. वास्तव में देखा गले आमे जेते प्रकार सब रचना लिखुचंती से प्रबंध हो, कविता हो, गल्प हो किंबा कौन गोटे रिपोर्ट को न्यूज पेपर हो, जहाँ किसी लिखुचंती लेटर लेख सबुड़िक लेखाटा प्रथमे मन भितर आरंभ हुए. एंड इफ आवर माइंड इज वैकेंट, इफ वी हैव नथिंग इन आवर माइंड, राइटिंग ए गुड कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. जदि आम मन भितर किसी ज्ञान नहीं, तथ्य नहीं, ताले आमे कोनसी प्रकार लेखा लिखि परिबा नहीं. एंड देयरफॉर व्हाट टू डू? We have to make our minds a storehouse of ideas and informations. जेहेतु सब प्रकार लेखा मन भितर सृष्टि हुए, जस्ट लाइक टेड ह्यूज पोएम थॉट फॉक्स, सब जाक लेखा मन भितर सृष्टि हुए. तेणुक आमको कौन करा पड़ो? वी हैव टू मेक आवर माइंड्स ए स्टोर हाउस, गोटे गंताघर करा पड़ो. कि गंताघर ना? इनफॉरमेशन, आइडिया, नॉलेज, डाटा, ये सब जिन को आम मन भितर सब साइती रखा पड़ो, गच्छित रखा पड़ो. एंड इफ वी वांट टू मेक आवर माइंड्स स्टोर हाउसेस ऑफ डिफरेंट इनफॉरमेशंस, आइडियाज, थॉट्स, एटसेट्रा, हाउ कैन वी एनरिच आवर माइंड? हाउ कैन वी मेक आवर माइंड्स स्टोर हाउसेस ऑफ इनफॉरमेशन, नॉलेज, एटसेट्रा? कम टू द थर्ड पॉइंट, रीडिंग भोरासीयसली. तामाने बाछ विचार शून्य भाव आम कौन करवा? जस्ट लाइक ए भोरासीयस इटर, जमी सर्वगिड़ा जहाँ मिला ता खाती लोक, सेमती आम कौन करवा? विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वी हैव टू रीड डिफरेंट ट्रिटाइजेस, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट ऑथर्स. ओके, आम आपको जब मन इच्छा पढ़ा, इफ वी मेक इट आवर पास टाइम, आवर हैबिट, ताले कौन हम? आवर माइंड्स विल बी रिच विथ थॉट्स एंड आइडियाज. आम मनटा पूरा पूरी विभिन्न प्रकार भाव, विभिन्न प्रकार तथ्य, विभिन्न प्रकार ज्ञान रे समृद्ध हो, रिच हो. अच्छा, जो माइंड आम रिच हो, आम कौन करवा? एट द सेम टाइम while reading different writers, different books, different poems, different essays, different reports, at the same time we have to accept, we have to imbibe, we have to observe in our minds. आम मन भितर कौन करवा? we have to accept the style of presentation and the wordings, the phraseology of those great writers. आम जो ऑथर मानकर बही पढ़ा, जो लेखा गुड़िक पढ़ा, जो प्रबंध पढ़ा, जो रिपोर्ट पढ़ा, जो लेटर पढ़ा, तार जे लेखक, तार जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन से केमिति ताको उपस्थापना करिछि सेटा एवं की प्रकार सब शब्द व्यवहार करा होछि, आमे कोन करिवा? ताको निजर करिवा, निजर आयत करिवा. ओके, आमे ए सब करिवा. तापरे कोन करिवा ना? आफ्टर दैट वी हैव टू start with small topics that interest us. एतिक सब पढ़ी सारा पर तो नेक्स्ट स्टेप हो कौन ना? वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग, नॉट बिग टॉपिक्स, नॉट डिफिकल्ट टॉपिक्स. तापर आम कौन करवा? बेसी कष्टिया, बेसी लंबा ये सब टॉपिक न नहीं कि
संक्षिप्त छोट एक्सपेंशन टाइप जो टॉपिक रही फॉर एग्जांपल राइटिंग एंड एक्सपेंशन माने एक्सपेंडिंग द आइडिया जस्ट लाइक ए प्रोवर्ब जमी आमको कहुच्छी एम्प्टी वेसल साउंड्स मच ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग कि राइटिंग ए पैराग्राफ ऑन योर फ्रेंड ऑन टेलीविजन और अबाउट ए पेन आम जो छोटिया छोटिया पैराग्राफ राइटिंग सब अच्छी फास्ट पे सेमती आमको करिया टू बिगिन विथ वी हैव टू टेक सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स and taking those interesting topics let us write short paragraphs short expansions etc. ताकू जगह आम लिखा तापर कौन करवा ना while writing short essays expansions short reports कौन करवा we should not attempt at difficult complex sentences आम से कौन करवा अति सरल वाक्य simple sentence माने जोटा कि आम कौन सी कंपाउंड कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्यवहार करवा नहीं सिंपल सेंटेंस व्यवहार करवा ता सहित आउ कौन करवा ना वी हैव टू यूज सेपरेट पैराग्राफ्स फॉर ईच आइडिया प्रत्येक आइडिया आम अलग अलग शॉर्ट पैराग्राफ करवा छोट छोट पैराग्राफ करवा कहीं ना दीज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड दीज सिंपल सेंटेंसेस आर मोर फोर्सफुल more effective than the complicated complex and long paragraphs जो लोक मैंने हैंडल कर पाना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिफिकल्ट वर्ड लेंथी पैराग्राफ से माने रीडर मान प्रभाव शून्य हो पड़ती अर्थात से इफेक्टिवनेस रहे ना तेणु एट दि आउटसेट ट्राई टू राइट इन सिंपल सेंटेंसेस व्हिच यू हैव मास्टर्ड राइट different ideas in separate paragraphs ओके तापरे कौन करवा ना ये जो अभ्यास कले राइटिंग स्मॉल पैराग्राफ्स स्मॉल एसेज स्मॉल एक्सपेंशंस स्मॉल रिपोर्ट्स शॉर्ट लेटर्स रिप्लाई लेटर्स ये सब आम आरंभ करवा एंड वी हैव टू थिंक दैट समटाइम्स वी मे कमिट ब्लंडर्स बेले बेले आम जिते ज्ञानी हेले we may have some errors as regards to editing as regards to grammar व्याकरणगत त्रुटि हो पारे एडिटिंग रे त्रुटि हो पारे तेणुक दोज हु आर एक्सपर्ट्स दोज हु नो मोर दैन वी डू आम जी जानी आम जी अधिक ज्ञानी जो मैंने आम टीचर कि जो सीनियर आम एल्डर्स जो मैंने कि अधिक आम जानी आम कौन करवा ना से पाखे से देखा देखी से माने जदि किसी भूल थी से माने संशोधन करेंगे कि कौटी कमा कौटी कोलन कौटी सेमिकोलन कौटी इन्वर्टर कमा कौट कौन लगे एडिटिंग से सब बतईदे आ जिते से सब बतईबे बतला कौन करवा ना जदि सपोज दे क्रिटिसाइज अस सपोज दे रेकमेंड अस सजेस्ट समथिंग वी शुड नॉट टेक देम आमिस जदि आमको से समालोचना कले तो लिखी आसुनी ये तो लेखाटा भल है नहीं भाई एत कहीं भूल करूँ आमे सेटा को नेगेटिवली नबा नाही वी शुड नॉट फील डिस्करेज्ड वी शुड नॉट फील डिसहार्टेन्ड कहीं ना वी हैव टू थिंक दैट वी आर नोविस वी आर न्यू टू राइटिंग वी आर जस्ट लाइक स्मॉल चिल्ड्रेन माने स्टूडेंट्स आमे यदि निजको छोट बोली भाविबा गोटे छात्र बोली भाविबा आमे ज्ञानी बोली निजको न भाविबा तारे से माने जो माने हमको सब समालोचना करूछंती आमे ताको गोटे पॉजिटिव गोटे सकारात्मक भाव में ग्रहण करवा अच्छा ये गोटे देख इट जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग ए डिश आम जमी कौन गोटे व्यंजन कौन गोटे तरकारी प्रिपेयर करने कौन आमको दरकार फास्ट ऑफ ऑल विदाउट वेजिटेबल्स विदाउट द नॉन वेज आइटम्स वी कैन प्रिपेयर ए डिश करी आम जमी परिवा पाखे नथिले कि आमिष जिनिस पाखे नथिले आम गोटे तरकारी करि पारुना कि तरकारी तो आम कर माँ मैंने आम कौन कर तू छोटिया छोटिया जिन कर बेसी लोक प्रिपेयर करना तापर आम जो नुआ गोटे आइटम कर कौन कर चखौं भल हो खराब होदी आम किए कहला लुण कमीगला कि लुण बेसी होगा किएटा मिठा आम यदि खराब आम किए भल रोसे करें इट जस्ट लाइक दैट तेणु आम समालोचना को स्वागत करवा रादर वी शुड बी ग्रेटफुल टू दोज पीपुल दोज हु टुक टाइम टू करेक्ट आवर पेपर ओके तापरे नेक्स्ट हूँ कौन ना परफेक्शन कम्स थ्रू प्रैक्टिस राइट हैबिचुअली तेणु ये जो
practice makes a man perfect. Rome was not built in a day. आम जो रोम साम्राज्य गोटे दिन सृष्टि हो ना आम कौन जिन गोटे दिन इवन सून आफ्टर आवर बार्थ वी डिड नॉट रन आम जन्म हवा सागे सागे कौन धाइले धाई ना तेणु जेकोसी गोटे परफेक्शन आने मैस्ट्री आने आम कौन दरकार कंसिस्टेंट एफर्ट दरकार रेगुलेट दरकार हाबिचुआल एफर्ट दरकार आम क्रमान्वय से जिनसा को बारंबार लिखा एंड आफ्टर राइटिंग अगेन एंड अगेन द सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन ए टाइम विल कम व्हेन वी विल बिकम परफेक्ट वी कैन अचीव परफेक्शन वी कैन बिकम गुड राइटर्स ओके तो आम कौन करा पड़ो ना फॉर द सेक ऑफ परफेक्शन आम कौन करा पड़ो वी हैव टू प्रैक्टिस इट डेली तेणु यहाँ गोटे आम गोटे टास्क भाई रादर वी शुड टेक इट आज इट इज ए वर्शिप फॉर अस आम जमी ईश्वर पूजा करुँच श्रद्धा आग्रह सहकार पूजा करुँच आम जो लेखा अभ्यासटा को आम से दृष्टि ग्रहण करवा ओके आउे कौन हो ना कम टू द लास्ट वन फॉर डिफरेंट राइटिंग सच एज एसेज रिपोर्ट्स लेटर्स एटसेट्रा रीड as much of them as you can think yourself a student तेणु as you are students you will be asked to write reports of different kinds writing reports to newspapers you have to write reports as the secretary of a union or association you have to write investigating reports commercial reports you have to write short essays you have to interpret tables graph charts all these are different types of compositions तेणु आमे जेहेतु विभिन्न प्रकार प्रश्न आमको दिज्व परीक्षा आम लिखापी आम कौन करा पड़ो आज वी आर गोइंग टू अपियर क्वेश्चंस बेसिंग ऑन द एसेज आमको दुईटा एस दिखाई माने 5 into 2 5 मार्क दिखाई आम कौन करवा एंड इफ वी डू नॉट रीड 50 or 60 essays of the same kind we cannot become good writers आम यदि एसे विभिन्न राइटर विभिन्न पब्लिशर विभिन्न एसे बुक आम न पढ़ा आमर आइडिया आसो नहीं तेणु से कौन 5 मार्क आमको वी विल फेल टू आंसर दे आमको रिपोर्ट राइटिंग जो विभिन्न प्रकार रिपोर्ट सब कहले से रिपोर्ट आमको पढ़ा पड़ो सो दैट इनफॉरमेशन विल बी इन योर माइंड वी कैन नो द फॉर्मेट द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन कौ शैली लिखा होची कौ फॉर्मेट लिखा होची कि लैंग्वेज यूज करा होची केमिति पैराग्राफिंग करा होची आम सब सेगुड़ा शिखी पारिबा तेणु फॉर ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस वी हैव टू रीड एज मेनी एज पॉसिबल जिते संभव आम से गुड़िक पढ़ा ओके नाउ आई थिंक you will get a little help from my side and this is the result of one of my students those who some days back requested me to give some tips as to how improve the skill in writing and you can find different tips from different sources but remember one thing as you are preparing different dishes at home so also you are also going to prepare a writing a composition तेणु घरे आम जमी रोषे कर जिनस ना आम रोषे करें जिनस गोटे भल परफेक्शन आने आमको लोक किए कौ स्टाइल लिखुची कौ रेसिपी केमी किए प्रिपेयर करुच्ची आम जमी सब फॉलो करुँच वी हैव टू फॉलो डिफरेंट राइटर्स आउ लोक जमी चखौंट भल ना खराब हो कह सेमती आम जी अच्छा बेटर जो मैंने अच्छा आम बेसी जानते पाखे आम से परीक्षा करना वेदर आवर राइटिंग इज गुड और बैड ओके तेणु नाउ थैंक यू ऑल वेरी मच एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एवं योर फ्रेंड्स एंड इफ यू लाइक मे सब्सक्राइब टू ओके थैंक यू बाय